Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. I hope you all are fine and staying safe and happy. I am your science teacher, Miss Farheen, and I welcome you all to your science class. My dear students, as you know that today we are going to start chapter number 9, and the name of our chapter is Space and Satellite. And today I am going to give you a complete introduction of this unit. So my dear students, space में क्या कुछ होता है, satellites क्या होती हैं, इस चैप्टर में हम इन तमाम चीज़ों के बारे में स्टडी करने वाले हैं. So here you can see the student learning outcomes. लेकिन पहले मैं आपको एक इंट्रोडक्शन दे देती हूँ इस चैप्टर में हम क्या कुछ पढ़ने वाले हैं. The part of the universe that we know about contains about 200 billion galaxies. Some of these stars, such as the sun, have solar systems. In a solar system, planets revolve around a star. Some objects revolve around planets. They are called moons or satellites. Moreover, there are other moving bodies such as asteroids, comets, and meteors. All these objects move in space. In this chapter, we shall discuss these bodies in detail. So, my dear students, जो हमारी universe है, जैसे कि आप जानते हैं कि सोलर सिस्टम जो है ये एक गैलेक्सी में है और हमारी गैलेक्सी का नाम है मिल्की वे. पहले आप इन चीज़ों के बारे में पढ़ चुके हैं. लेकिन जो हमारी यूनिवर्स है, जो पूरी कायनात है, इसके अंदर देयर आर मोर देन 2 बिलियन गैलेक्सीज. मिल्की वे जैसी ही बहुत सारी और गैलेक्सीज हैं, उसमें और बहुत सारे सिस्टम्स हैं. जैसे हमारा एक छोटा सा सोलर सिस्टम है जिसके सेंटर में सन है. तमाम जो प्लैनेट्स हैं वो उसके इर्द गिर्द जो हैं वो रिवॉल्व कर रहे हैं. इसके अलावा स्पेस में प्लैनेट्स के इर्द गिर्द और मून्स या सैटेलाइट्स जिनको कहा जाता है वो भी रिवॉल्व करते हैं. इसके अलावा एस्ट्रॉइड्स, कॉमेट्स और मीटियोर्स जैसी चीज़ें भी स्पेस में रिवॉल्व कर रही हैं. इस चैप्टर में हम इन तमाम चीज़ों को जो है इन डिटेल डिस्कस करेंगे. So my dear students, here you can see the student learning outcomes. These are for the parents and the teachers to understand कि बच्चे जो हैं इस चैप्टर को ख़त्म करने के बाद इन तमाम चीज़ों को जो है वो अंडरस्टैंड कर सकेंगे. So my dear students, now let's quickly move forward towards the introduction, जिसमें one by one हर चैप्टर हर लेक्चर को मैं आपको इंट्रोड्यूस करवाऊंगी. So in lecture number 1, students will be able to define the term space and emphasize the need to explore it. So my dear students, बच्चे जो हैं स्पेस के बारे में जानेंगे और इसको एक्सप्लोर क्यों करना चाहिए, क्या क्या चीज़ें हैं इसके अंदर, लेक्चर नंबर 1 में डिस्कस किया जाएगा. Then in lecture number 2, the students will be able to recognize the role of NASA, National Aeronautics and Space Administration in space exploration. So my dear students, NASA एक ऐसी जहाँ पर जो है स्पेस को एक्सप्लोर करने के लिए मुख्तलिफ एस्ट्रोनॉट्स होते हैं और यहाँ पर जो है वो लोग स्पेस से रिलेटेड जो है वो स्टडी करते हैं. नासा जो है वो किस चीज़ का एब्रीवेशन है? नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन. सो दिस स्टैंड्स फॉर नासा. Then in lecture number 3, the students will be able to define the term satellite and describe its importance. So बच्चे जो हैं सैटेलाइट के बारे में बता सकेंगे कि सैटेलाइट क्या होती है और इसके अलावा इसकी इंपॉर्टेंस के बारे में भी बच्चे बात कर सकेंगे. Then in lecture number 4, the students will be able to describe the natural satellites and planets and solar system. So my dear students, space में natural satellites हैं जो कि हर प्लैनेट के इर्द गिर्द रिवॉल्व करिए. बच्चे सोलर सिस्टम, नेचुरल सैटेलाइट्स और प्लैनेट्स के बारे में डिस्कस करेंगे इन लेक्चर नंबर 3. देन वी विल मूव फॉरवर्ड टुवर्ड्स लेक्चर नंबर 4 एंड द स्टूडेंट्स विल बी एबल टू डिफाइन आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स एंड एक्सप्लेन देयर इंपॉर्टेंस इन एक्सप्लोरिंग द अर्थ एंड स्पेस. So my dear students, when the students will move forward towards lecture number 3, they will be able to discuss about artificial satellites. ये natural satellites के बारे में जब वो पढ़ लेंगे तो फिर उसके बाद natural satellite, artificial satellites के बारे में बात किया जाएगा. इनकी क्या importance है, इनसे क्या क्या काम लिए जाते हैं, that will be discussed. Then in lecture number 4, the students will be able to describe the uses of various satellites in space, that is geostationary, weather, communication and global positioning system, GPS. सो माय डियर स्टूडेंट्स, ये सैटेलाइट्स जो है किस किस किस्म की हैं, इनसे कौन कौन से काम लिए जाते हैं, जैसे कि वेदर जो है वो फाइंड आउट किया जाता है. इसके अलावा जीपीएस सिस्टम जो है विच इज़ कॉल्ड ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम, वो जो है इन्हीं सैटेलाइट्स के थ्रू जो है वो कनेक्ट होता है. एंड देन द जियो स्टेशनरी प्रोसेस, ये तमाम चीज़ें जो हैं ये सैटेलाइट्स के थ्रू जो है वो कंट्रोल होती हैं. तो दिस विल बी डिस्कस्ड इन डिटेल इन लेक्चर नंबर 4. Then we will move forward towards lecture number 5 and the students will be able to define artificial satellites and explain their importance in exploring the earth and space. So my dear students, artificial satellites किस तरीके से earth और space को explore करने में मदद करती हैं, we will discuss that in lecture number 5 and then we will move forward towards lecture number 6 in which the students will be able to
recognize the key milestones in space and technology. So my dear students, कौन से milestones achieve हो चुके हैं space से related, that will be discussed in lecture number 6. And then we will move forward towards lecture number 7, in which the students will make a project related to स्पेस, एक सैटेलाइट जो है वो हम बनाएंगे. सो यू विल थॉरली एंजॉय दिस लेक्चर. देन वी विल मूव फॉरवर्ड टुवर्ड्स द रिव्यू ऑफ दिस चैप्टर, दैट विल बी लेक्चर नंबर 8, जिसमें जो है तमाम पॉइंट्स को और SLOs को जो है रिवाइज किया जाएगा. आई विल गिव यू द रिव्यू ऑफ ईच रीडिंग पेज, एंड बाय द एंड ऑफ दैट लेक्चर आई विल प्रोवाइड यू विद एन असेसमेंट शीट, ताकि आपको असेस किया जा सके कि इस चैप्टर से बच्चों ने क्या क्या कुछ सीखा. सो माय डियर स्टूडेंट्स, आई होप you will enjoy this chapter. You will learn a lot of things from it. Keep everybody around you safe. Stay tuned for the next lecture. Thank you so much and Allah Hafiz.